हेलो પછી પેલું ઇકોઈંગ જતું રહ્યું. So we'll start from face. Cancer teeth, teeth right malignant, hair growth of hair, woman in upper lip. Which case આવે છે? Think about psychotic. ઓલિયમ જે કોરિસ આપીને થાકી જઈએ છે તો બી રિઝલ્ટ નથી મળતું. No result with oleum decoris. Pain, sinus, maxillary. Swelling eyes under morning. This morning swelling under eyes, they remedy psychotic. And we have prescribed Calipra. And we are not prescribing this remedy psychotic. It is big failure. And ticks, very nice remedy psychotic. Then herpes persistent. If you get herpes persistent, think about this psychotic. Vesicle chicks inside. बहुत केस आते हैं ये भी. Then inflammation tongue exfoliate, single drug again. Stick to palate tongue like Nux mosciata. Nux mos. Taste wanting loss of taste. Ulcer tongue deep. And what else? What tongue? Caseous deposit in tonsils. Throat and external throat of psychotic. Choking easily. This choking you will get in hyoscyamus, Kalikab and Morgan Pugh. कुछ अटका हुआ है, कुछ चोक हो रहा है यहाँ पे. Swelling tonsils, children in. Another is goiter. Swelling cervical gland. Swelling thyroid gland. And torticollis. Torticollis we have lac. हेलो, स्लाइड दिख रही है ना सबको? Yes, sir. Thank you, Nitin. Then differential diagnosis with psychotic. Pulsatilla, thuja, lyco, sepia, natrium, tuberculinum, basilinum, calibachromicum, sulfur, silica, calcareous are related to psychotico. Please remember these remedies. But in fact, thuja and medorinum are to be kept in mind when you are prescribing psychotico. Think also of thuja and medorinum because of the mild psychosis. Face swelling morning under eyelid. Single drug. In one of my case, Nisha Panchal something one case. From this I learned psychotico. Face swelling morning under eyelids. Single drug. These are the cases which we have solved cases. Psychotico, ambition increase for fame. Psychotico, alumina, aurum sul, conam, graphitis, lachesis, nux vomica, phosphorus and staphylococcus. Tea aversion, bacillus 10 and psychotico. They will tell you I don't like tea. Liking tea में बहुत सारे होंगे. Don't liking में काफी कम होंगे. And these are two bowel nosode. ऐसे bowel nosode को पकड़ना है. Get hold of this bowel nosode. और आगे क्या आपको बोला था? Head hair graying becoming prematurely. ऐसे करके बताए सब देखो. Psychotico, thyroidinum and viscoidum, acid phos and lycopodium. Acid phos and lycopodium. एक छोटा सा 11 साल का बच्चा 30-32 साल का दिख रहा है. This is the entry point of psychotico.
Then precancerous. Precancer is Gartner batch and psychotico. Precancerous. So when the patient is going towards the cancer changes, think about this psychotico. Then comes trigger finger. What a remedy psychotico in trigger finger. When ruta even fails. When ruta even fails. When ruta argentum met fails in trigger finger. ऐसे पेशेंट बोलते हैं ये स्टिक हो गया, ऐसे ऐसे करके खोलना ट्रिगर फिंगर, ऐसे कोई भी फिंगर ऐसे। ओल्ड एज में ये बहुत कॉमन होता है, पर यंग इवन इन यंग पीपल दे कम आउट दिस ट्रिगर फिंगर. Ruta, calcirapo, acid benzoate is also one. Think about psychotic. I am teaching you differential diagnosis with other remedies also. Now comes Down syndrome. Morgan Pure, Psychotico, Barata, Bufo, DNA, Jatamasi. Jatamasi नाम सुना है? Jatamasi. Nardos species Jatamasi. Jatamasi is a root actually. Jatamasi. जटामासी का भी मैं आपको मटेरिया मेडिका सिखाऊंगा. जटामासी आई लर्न फ्रॉम डॉक्टर फारूक मास्टर एंड डॉक्टर सरकार. जटामासी आयुर्वेदिक ड्रग, करेक्ट. कार्सिनोसिन, मेडोराइनम, पर्टिसोनिन and toxoplasma group, and I am working on this toxoplasma also, and it is a very good remedy, toxoplasma in Down syndrome. Choking easily, hyoscyamus, psychotico, calicarb, and Morgan Pure. You can give in 200 potency, wait and watch and see what's the result. It's 200 potency. Then stool thin after eating. मैं बोला था आगे. Then female genital uterine polyp. Uterine polyp बहुत लोगों को मिलेगा आपको. Gynec sonography will get. In this, Morgan Pure, Psychotico, and Bacillus 7. Bacillus 7 is tubercular. Then comes Leucorrhea offensive. Morgan Pure, Morgan Batch, Gartner, Bacillus 10, Psychotico. Gartner is syphilitic. Then comes nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome, we have three bowel nosode. First is mutabile, Gartner, and Psychotic. You should learn what is nephrotic syndrome and the symptom of nephrotic syndrome. What do you see in nephrotic syndrome? So this three bowel nosode we should think about when we are treating nephrotic syndrome. Then comes nausea, fat after, especially egg. Egg खाने के बाद nausea. Proteus, Morgan Pure, Bacillus 10, Psychotico, Ferrum, Lycinum, Colchicum. Lycinum is between veratrum alb and hyoscyamus. Lycinum comes between veratrum alb and hyoscyamus. Then pain in iliac fossa. This is very good rubric in many of the cases of hip joint disease, especially hip joint disease. Hip joint disease. Hip joint diseases. In clinical cases, when you see pain iliac fossa, think about these 4-5 remedies: Protease, Bacillus 10, Pertussin, Morgan Pure, and Psychotico. Now there is wonderful addition of Dr. Massimo for Psychotico. Inflammation, sore throat, tonsils. Think not only of streptococcinum, think about Psychotico. Then asthmatic complaints. Asthma. Remedy relationship with Psychotico. Psychotic remedies like Thuja, nitric acid, natrum sulfate, and basilinum
vesicular types entimta, Rostock, Basilinum, and Thuja, psychotic. Lycopodium is often complementary to this nosode. Lycopodium, most important side of today's webinar is this. Why? When these polycrest remedies are being, when you are descending for this polycrest remedy, you should also think about psychotic. And for sapia is fecalis, Bacillus fecalis. The last remedy of the seminar is fecalis. Third case of psychotico. Psychotico 200 in nosebleed of long standing in a girl without an apparent reason, cured completely with few doses of long interval of psychotics. Cured. The word is cured. Psychotico. Clinical. Albuminuria, allergic food, alopecia, amenorrhea, anemia, arthritis, fibrositis. This I have repeated actually. And this was the case of psychotico, my own case. In this case, fat aversion was there, position abdomen, sweet desire, hair growth of hair in women, and masculine growth in women, and nail biting. The psychotico was the remedy given in one of my case. Now Bacillus 7, which is tubercular. Tubercular. Now this name, because it was the seventh known lactose fermenting type of bacillus to be observed in the laboratory, and as it did not conform to any of the previous known group, it was given the name 7. Okay, by Dr. John Patterson. By John Patterson. So Bacillus 7 is tubercular, right? Clinical indications of Bacillus number 7. First is asthma. Second is arthritis. Many arthritis case, believe me, my dear children and my colleague, please think about Bacillus 7 in arthritis cases. Please, please, please. And it is my clinical understanding about Bacillus 7. It never fails. It never fails. And you are very sure the medicine will work for you. So guaranteed Bacillus 7. I have been giving this bowel nostrils since 26 years of my practice. 26 years I have seen. Then only I have come up with this webinar and said, these are all my clinical research, which I have done through years of my understanding. So backache, bronchitis, even cardiac arrest, constipation, deafness, exhaustion, fatigue, fibrositis. आजकल mental fatigue कितना हो गया है? Too much mental fatigue. Bacillus 7, menorrhagia, metorrhagia, बहुत common. Myocardial weakness, osteoarthritis is a gem and gem. Osteoarthritis नोसोड से भी अच्छा पावरफुल है Bacillus number 7. आप लोग देखे देखो, you will definitely get good results. Osteoarthritis. Many cases who are going above 70, these two things will happen together. Osteoarthritis and osteoporosis. मेरी दादी सुबह खड़ी हुई, बाथरूम में गई, वो गिर गई. डॉक्टर ने बोला बोन का हड्डी दो टुकड़े में हो गई. Give a dose of Bacillus 7. First think about Bacillus 7, tubercular. समझे आप लोग? अभी याद करो कि ऐसे कोई केस देखे हैं आपने? धोनी बोल रही. Yes. Osteoarthritis and osteoporosis. चलो एक चीज और बताता हूँ. Let's go. I'll show you very interesting thing. Let's type this osteoarthritis.
ऑस्टियोपोरोसिस, इसको ले गए, ऑस्टियोपोरोसिस लिया, शेयर करते हैं, शेयर, ऑस्टियोपोरोसिस लिखा आपने, फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस लिखो, दोनों को कंबाइन किया, सी द रेमेडी व्हाट इज कमिंग, बैसिलस 7 एंड डिसेंट्री फॉर्म, दिख रहा है सबको? हेलो? यस सर, दिख रहा है। सी ऑस्टियोपोरोसिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस, बैसिलस 7 एंड डिसेंट्री फॉर्म, दो ही दवा को आपको डिफरेंशिएट करना है। डिसेंट्रिकोकॉम को आई विल शो यू द माइंड सिम्टम ऑफ डिसेंट्री, because dysenterycocom is cancermycin, bacillus 7 is tuberculomycin, ऐसे डिफरेंशिएट करना है, सो सिंपल इट, मेक होम्योपैथिक सिंपल, it will never fail in your practice, never fail, never ever fail. Adonis software gives two remedies with this pathological condition. Sir, before 2 years, my daddy just fell down in bathroom, and we shown to our this ortho. He said ki Correct. she is very elderly, 85, so we can't go for operation. You have to just give her support and rest. And after 6 months, because of pain and all this, she just got expired. My God, Right now, see? I understood ki Yes, you this is wish the you should best have treatment. this. We are losing so many of our loved ones because we don't use bowel nosode. Dada, dadi, old age people we have germanium. अभी याद रखना जर्मेनियम, बताता हूं आपको जर्मेनियम कैसे सोचना है, सी, जर्मेनियम बताता हूं आपको, जर्मेनियम भी प्रैक्टिस में रखो आप, ऑस्टियोपोरोसिस, ओल्ड पीपल इन, कैन यू सी दिस स्लाइड, जर्मेनियम मैट दिख रहा है सबको? यस सर। हाँ सर, दिख रहा जर्मेनियम, है। यस सर, दिख रहा है। सी जर्मेनियम, जर्मेनियम्स आर वेरी एडवेंचरस पीपल, लाइक ट्यूबरकुलिनम, बेसिलिनम, कार्सिनोसिन, जर्मेनियम, जर्मेनियम का भी पूरा सेमिनार ले सकते हैं जर्मेनियम के ऊपर, वेरी नाइस रेमेडी दिस जर्मेनियम, ओके, सो अगेन विल कम बैक to Bacillus 7. So beautiful remedy this Bacillus 7 is. So beautiful. Now related remedies. This Bacillus has come closer relation with two halogens. Dear bachas, see, two halogens, bromium and iodine. So when you are treating bromium cases and iodine cases, and often in combination with potassium, so that comes kali iodate or kali brome and kali iodate. This is given by Dr. Borland. किसको पता है who was Borland? Dr. Borland. Borland is the master of children remedies. No, He was a doctor in London. Borland's pneumonia, best ever book written by someone authority. Very nice book by Dr. Borland. Borland you should read daily, I think. बोलेंड के ऊपर पूरा वेबिनार ले सकते हैं, डॉक्टर बोलेंड्स रेमेडीज, देन ब्रोमियम आयोडीन, particularly kali salt, especially kali, among remedies related to nosodes are many iodates, calcareas, according to English authors, kalicarb, calcarea flor, calcarea carb, rust tox, causticum. New remedies are mandragora officinalis. What is mandragora? It is from Solanaceae family, mandragora. ओके, आगे बढ़ते हैं, जूलियन बावल नोसोड, जूलियन क्या बोलता है, ट्यूबरकुलर कंडीशन, हाइपोथायरॉयडिज्म, सेक्सुअल वीकनेस, फ्रिजिडिटी, लोकोमोटर सिस्टम, लंबैगो, गोनोआर्थ्रिया,
फ्लैट फुट, पेनफुल फ्लैट फुट, कभी देखा है? बहुत केसेस है पेनफुल फ्लैट फुट, क्या बोलूं मैं आपको, कितने केस होंगे। चप्पल लेने जाते हैं कि सर आपका फ्लैट फुट है, तो आपको चप्पल कोई ठीक नहीं आएगा, फ्लैट फुट है, उसके लिए फिर सोल बदलते हैं। थिंक अबाउट दिस रेमेडी बैसिलस सेवन, उसको एक 200 का डोज दो आप, just give 200 one dose and see what happens to painful flat foot. Rheumatoid arthritis of knee and heel, plenty of cases. Recently, my wife had this. Many cases you will see. Baroda, you can see so many cases. Heel pain. શું થાય છે? એડિયોનો દર્દ. Bacillus 7 is there for you. Give 30 to those patients. When you have exact symptomatology with mind symptom, give in 200 or 1. Simple. We have only 3 potencies. So no confusion. 30, 200 and 1. Any doubt, read Stuart Close. कोई भी डाउट हो तो स्टुअर्ट क्लोज को पढ़ो अच्छी तरह से. Then Patterson's keynote. What is the keynote of this Bacillus 7? Mind, mental and physical fatigue. This is very important of Bacillus 7. Proving of Bacillus 7 is not unlike Proteus or similar relation reported by related to chlorine. Whereas Bacillus 7 seems to be closer relationship with two halogens, that is chromium and iodine, often in combination with potassium. So Bacillus 7 is why it is tubercular, because it is affecting these two, iodine, chromium, 17 column, right? Periodic table. Now the mind chapter of Bacillus number 7. What a mind symptom of Bacillus 7. Superb, you will get. So what is the mind of Bacillus 7? आपको बिलीव नहीं होगा कि ऐसा भी होता है, ऐसा माइंड सिम्टम है Bacillus 7. डेल्यूजन अनफिट फॉर वर्क. अभी मैं ये वर्क के लिए अनफिट हूँ, सालों से ये आदमी काम कर रहा है और वो अभी बोल रहा है कि मैं अनफिट हूँ. दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ Bacillus 7. Then comes insanity, megalomania. ये काम मेरे लिए बहुत बड़ा है, मेरे से नहीं होगा, मेगालोमेनिया है. Laziness, routine, not wanting to depart from usual. जो रूटीन काम कर रहा है उसी के साथ ही उसके डिपार्ट नहीं होना. कैप्सिकम, रूबिएसी एंड मॉर्फिन मिक्स. प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड इन कैंसर. प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड इन कैंसर. बहुत सारे कैंसर केसेस में प्रोस्ट्रेशन ऑफ माइंड है, तो थिंक अबाउट Bacillus 7. Prostration of thought, work of aggravation, single remedy. This is the entry point in the case of Bacillus 7. अगर आपको एंट्री पॉइंट चाहिए Bacillus 7 के लिए, ये प्रोस्ट्रेशन आपकी एंट्री पॉइंट रहेगी. इवन ये भी प्रोस्ट्रेट, लेजीनेस, रूटीन, एंट्री पॉइंट इनटू द Bacillus 7. नंबर 7. दादा दादी, नाना नानी के केसेस में ये सोचना पड़ेगा आपको, प्रोस्ट्रेशन मिलेगा. अनफिट फॉर वर्क. अभी मैं वही काम, अभी मैं अनफिट हूँ. मैं अपनी बहू को સબ્જી સુધાર કે દેતી હતી, આપણે ગુજરાતીમાં કહે ને સબ્જી સુધારે, હવે મારાથી આ કામ નથી થતું, હવે this is the evolution of or the journey of the case that you'll see this mind symptom of Bacillus 7, which is tubercular. समझ रहे हो आप लोग? एंड थिंकिंग मतलब जो रेगुलर वर्क हाँ, कर रहा था उसको अब वो अनफिट हो गया, वो yes, he is not able, or he is not able to do. not able to. Laziness, routine, not wanting to depart from usual work. सर हिंदी में बताए तो जितना अच्छा काम होगा. कर रही है ना, जितना काम करे वो करेगी, पर अलग से कुछ नहीं करे. हाँ,
बोलो। सर हिंदी में बोले तो अच्छा रहेगा वो। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी। सॉरी। जो 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 this is the entry point of bacillus. Try to understand. And lot of frustration you will see in many cases. And thinking of the complaint will also aggravate. And unconscious transient. थोड़ा टाइम के लिए वो बेहोश हो गई. And delusion unfit for work. She has a delusion that she is now unfit for her work. Very important. ये एंट्री पॉइंट भी होना चाहिए आपका. This is the again entry point in the cases of bacillus number 7. मैं आपको रेपर्टरी में ले जा रहा हूँ कि this is very important. Let's see the repertory and we'll type delusion. Let's go for delusion. Delusion, unfit for work, unfit work for. We have just 9 remedies. आपको दिख रहा है? Yes. देखो ये दिख रहा है सबको. बैचिलस 7, कैलेंडुला, कुप्रम आर्स, कुप्रम सल्फ, इलिएक्टस. Ileactus is a bird remedy. Bald-headed, white bald-headed eagle, mephitis, sacrum alba, and taraxacum. Taraxacum is excellent remedy. Compositive family. See, delusion, unfit for work. Delusion, unfit to be loved. There, see, germanium. देखा आपने यहाँ पे? हेलो. यस सर दिख रहा Yes, है। sir. यस Yes, यस sir. यस। Yes, देखो sir. ये Yes, sir. लव्ड वन देखा आपने, और वो देखा ऑस्टियोपोरोसिस वाला. ऑस्टियोपोरोसिस. यस हाँ यस सर. सर। Yes. अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ. देखो, ऑस्टियोपोरोसिस, ओल्ड एज, ओल्ड पीपल इन, दोनों को मिलाओ. एक मिनट. हाँ, ओल्ड. सी, अभी क्लब करो. व्हाट कम? सी, Germanium, Sir, what sir. is unfit for love? जर्मनी. अनफिट टू बी लव्ड. अभी मैं दूसरों के लिए प्रेम वाला हो ही नहीं. मैं आई एम नॉट बीइंग अनफिट, फिट फॉर लव्ड. अभी बच्चे लोगों ने मुझे आश्रम में भेज दिया है, बूढ़े वाले आश्रम में. समझे आप? वृद्धाश्रम है वो, सद्भावना इन राजकोट. सबसे फेमस है राजकोट में. राजकोट वालों को पता होगा. सद्भावना वृद्धाश्रम सर। हाँ, सद्भावना Yes. वृद्धाश्रम. You will get Yes. so many germaniums there. Osteoporosis, old people in delusion, unfit, love to be. This is the grand Unfit. unfit, love to be. अबे मुझे कोई Unfit, प्रेम yes, sir. करता ही Unfit नहीं. to or Unfit, not love to cared. be. हाँ, not cared. इसलिए फेंक दो आश्रम में. So these two remedies will work for such cases. How to evolve these remedies? No, they are very beautiful remedies. See, laziness, routine, not wanting to depart from usual. Bacillus 7, capsicum, rubiaceae, and morphine mix. See the picture. Then comes Alzheimer's disease. Ronald Reagan, the famous president of USA. President. एल्जेमर्स को जानने उस टाइम पे लोग जानना शुरू किया रोनाल्ड रेगन के पास. where the Alzheimer's kids. इसके ऊपर you know what is Bacopa?
Bacopa Manori. Who will tell me Brahmi. Bacopa? Huh? Brahmi. Yes, Brahmi. Brahmi. Brahmi has so many symptoms of mind. In one X you should give. Then serotonin. My God, what a remedy this serotonin is. पूरा सेमिनार ले सकते हैं serotonin को. Ginkgo biloba, superb remedy for old age. Then comes galanthus. Galanthus is also very nice remedy. We are missing in our practice. Then comes thrombosis of सर retinal थोड़ा vein रिपीट कर central. सको, कुछ भी सुनाई नहीं दिया कुछ भी सर, सुनाई थोड़ा नहीं दिया. रिपीट कर सको. नहीं. बिल्कुल बिल्कुल रिपीट करते हैं. Alzheimer's disease, Bacillus 7, Bacopa, serotonin, Ginkgo biloba, and galanthus. And laziness routine, not wanting to depart from the usual. यूजुअल जो रूटीन वो कर सकते हैं, जैसे नहाना धोना, वो बाकी का कुछ भी आया तो वो नहीं कर पाएंगे. दैट इज एंट्री पॉइंट ऑफ बैसिलस सेवन. ऑस्टोपोरोसिस एंड ऑस्टोआर्थराइटिस. इन ओल्ड एज में जर्मेनियम सोचना. एंड डिल्यूजन, अनलव्ड, अनफिट फॉर लव्ड टू बी, जर्मेनियम. Then comes thrombosis of retinal vein central. Superb rubric of Bacillus 7. Let's see this rubric. Let's see this rubric. Let's see this rubric. We'll type thrombosis. I के अंदर thrombosis. Are you able to see? हाँ, Yes, sir. डायबिटिक पेशेंट में भी से. डायबिटिक Yes. पेशेंट में भी यूज कर से. हेमोमेलिस है, फॉस्फोरस है, बोथ्रोप्स है. See Bacillus 7. Okay. Bothrops. Hemamalis. Hemamalis desire to be respected. This is hemamalis. And Bacillus 7. Are you able to show this rubric? Yes, sir. See Bacillus 7. Bacillus 7 के बारे में सोचो आप. थ्रोम्बोसिस तक पहुंचता है Bacillus 7. Thrombosis. Very nice remedy. We are missing in our practice. Old people's remedy. Or you can think about geriatric remedies. Bothrops, hemamalis, phosphorus. And this is, I think, in the 2 marks. We'll make it to Bothrops. Bothrops is a snake. Then comes ganglion, hand right, single remedy. Ganglion. शायद ये दिख रहा है कि नहीं? हाँ, दिख रहा है. Ganglion, hand right. Very important. The single drug. Right में है. Think about Bacillus 7. Whenever. Then comes stiffness, cervical. Reason, not crack leg. Not crack leg. Cut. Cracking. Cracking, we have Magnus polus. Australis. And X-ray also. X-ray. X-ray आप बोरिक में अगर निकालते हो, just open your boric. If you have boric, let's see X-ray from boric. Thank you very much. So let's see X-ray. X-ray. If you have boric, please open boric. Nowadays, you will see lot many X-ray cases. How? Just read this. Head, sticking pains in different parts of head and face. Dull pain in the right upper jaw. Stiff neck. Underline कर दो, stiff neck. Sudden cricks in neck. बाजू में लिखो Bacillus 7.
मैग्नस पोलस लिखो. पेन मोर सीवियर बिहाइंड ईयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, बिहाइंड ईयर्स. फिर लिखो पेन इन मसल्स ऑफ नेक व्हेन लिफ्टिंग हेड फ्रॉम पिलो. माय गॉड, आजकल ये बहुत सारे केसेस मिलेंगे आपको, बहुत सारे. ये पेन हो रहा है, ये कंप्यूटर वर्क, ये सब, ये दुख रहा है सर. ये आप चेक करो, आपके में भी होगा. ट्राई करो, सुबह मिलेगा या. देखो लोग ऐसे करेंगे, पेन हो रहा है, क्योंकि ज्यादातर हम मोबाइल पे ही रहते हैं, ऐसा करते हैं. Yes. Pain in muscles of neck when lifting head from pillow. Fullness in ears, ringing in head. So it is remedy for tinnitus also, like arnica. एक्सरे. और देखो ये एक्सरे के अंदर ये देखो, री एस्टेब्लिश सप्रेस गोनोरिया. मतलब एनी डिस्चार्ज विल कम आफ्टर गिविंग एक्सरे if it is suppressed. And this concomitant you will get palms rough and scaly like bismuth. उसके बाजू में bismuth लिख दो. Palms rough and scaly is the entry point of X-ray, and it is excellent remedy for psoriasis. X-ray. देखो इसमें देखो नीचे दिया हुआ है. बोरिक के अंदर मैग्नस पोलस ऑस्ट्रालिस. ये लास्ट लाइन देखो, साउथ पोल ऑफ मैग्नेट सीवियर पेन इन अनदर साइड ऑफ नेल्स ऑफ द बिग टो. ये तो आप दोगे और रिजल्ट आएगा. सो वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, इनगोइंग टो नेल्स, साउथ पोल. एंड क्रैकिंग, ये देखो मैग्नस पोलस आर्टिकस. आर्टिकस से ऑस्ट्रेलिस के बदले में आर्टिकस कर दो. क्रैकिंग इन सर्वाइकल वर्टिब्रेस, sensation of coldness and toothache. In umbo, polyumbo is tendency of old wounds bleed afresh. And electricities or electricitas is a dread of approach of thunderstorm like rhododendron. And heaviness of limbs. Give a 200 dose of electricitas. 200 egg dose. Heaviness of limbs and thunderstorm. This remedy was used by even Hahnemann also. Hahnemann remedy है और ये बहुत सोरिक रेमेडी. इलेक्ट्रिसिटी यूज करना. डॉक्टर एल.एम. खान फ्रॉम कलकत्ता मुझे ये सिखाया है रेमेडी, कलकत्ता. और दूसरा मैं एक्सरे का ये भी बता, इरिथीमा अराउंड रूट ऑफ नेल्स. दिस इज आल्सो द एंट्री पॉइंट ऑफ एक्सरे. और मेनी स्टरिलिटी केसेस. सी व्हाट इज रिटन इन जनरलिटीज में चलेगा. Distressing pain, sexual glands are particularly affected. See, sexual glands are particularly affected.